Hello and a very warm welcome to all of you to Sky 247 Net presents Not Just Cricket. I'm your host Karishma Kotak and I have with me the wonderful Nikhil Chopra, and we're going to be talking about our game ahead, which is, as we know, Hyderabad versus Rajasthan, and it's going to be a very, very interesting game. For those of you who don't remember, last year Rajasthan and Hyderabad finished 7th and 8th respectfully. So will this new setup propel them higher? Tom Moody has replaced Bayliss as the Hyderabad coach. That's the update. And hello, Nikhil, how are you? Good, Krishna. Good to see you. Lovely Good to smiling see you face. too. You all ready for the battle royale? Rajasthan Royals versus the Sunrisers Hyderabad, Game 5. Yes, and I have to say that RCB is like, I have a soft corner for RCB. Well, you can keep that soft Rajasthan. corner. No, you Me. can Obviously, I keep have that a soft soft corner corner. for you. But Rajasthan Royals, the men in pink, Krishna, where are you going to see them? You know what it was? Yesterday, I'm going to tell you this. My producer made me go through all of the t-shirts and told me, which is your favorite color? Then I was like, RCB. Then there was pink for Rajasthan. So, chalo, mistake ho gaya, chalo. There you go. Never mind. But मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये गेम देखने के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है ना बड़ी खतरनाक लग रही है ऑन पेपर। जिस तरीके से उन्होंने बैठ के प्लेयर्स को चुना है, बुना है, अगर हेड टू हेड पे नजर डालते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं है। 15 games, हैदराबाद has got 8 to their names and Rajasthan has got 7 to their names. हैदराबाद अगर एक कूल काम कलेक्टेड कैप्टन है तो वहीं पे द एक्सुबरेंस ऑफ यूथ भरी हुई है राजस्थान रॉयल्स में, with a nice blend of experienced bowlers as well. So I'm very interested in seeing this battle because this is going to be a cracking of a game. And for the first time, we're in Pune, Maharashtra Cricket Stadium. We're going to be playing this game, the first game in Pune. Yeah, in Pune, which is going to be very, very exciting. Also, I had mentioned to you earlier that Tom Moody has replaced Bayliss as the Hyderabad coach. So let's talk about that a little bit further. Yeah, well, Krishna, see, he was there, then he wasn't there for a couple of seasons as well. He's back at the helm of Yeah. things, but because he's been around for so many years, with VVS Lakshman also being their mentor, they got a lot of inputs getting from VVS who the Indian talents are. Now they've got Hemant Badani as the support staff who's going to be looking at talent scouts, and also they've got, if I'm not wrong, Brian Lara as their batting consultant as well. But it's all about some of these youngsters that can pick out brains of Brian Lara as well as Tom Moody, people who've been around for a couple of seasons but not have had so many of the game time. Abhishek Sharma, Abdul Samad, these are match winners in their own right. Hopefully these guys get a game because they've been around, but they'll get some more opportunity as well. They've got a decent side, make no mistake about it. Umran Malik, watch out for this kid, one of the fastest bowlers going around, not just the IPL, but in the world as well. And he's going to be partnering with Bhuvneshwar Kumar with a world of experience. He'll get to learn a lot. Then you got Karthik Yeah. Tyagi, quick bowler as well. So, lots to look forward to. But my only worry is with Kane Williamson, Nicholas Puran, last couple of seasons, he's been on the quiet. But just to strengthen their batting, राहुल त्रिपाठी को भाई बड़े पैसे खर्च करके इन्होंने लिया है केकेआर के लिए। लास्ट सीजन बड़े उन्होंने रन बनाए थे, तो at the top of the batting order, he'll be looking to take on that responsibility. Priyam Garg, Abdul Samad, these are guys who can win you games without a doubt. Abhishek Sharma एक और Yeah. ऐसा नाम है. So, Bilkul. Also, exciting. it is going to be exciting, but no Bairstow, Rashid, and Warner. How have they replaced their stalwarts? I mean, like you said, they've got great names, but must be feeling slightly nervous or confident. What do you feel? जैसे कहते हैं ना, अगर कोई नहीं है तो यंगस्टर के पास एक मौका है, तो मौका है, मौके पे ही चौका लगाना जरूरी है. They've got the dance floor. You need to go out there and dance. You don't get opportunities to go out there and play on a world's most favorite cricket league. So for youngsters, well, people like David Warner not there, Rashid Khan not there, time for some of these youngsters to step up and say, well, I can take on that responsibility. मैं मैचेस जिता के आपको दिखाऊंगा. गुरुजी, तभी तो कहते हैं ना, बहुत से खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जिनका नाम जो है ना वो छप जाता है, और वो छपेगा तभी अखबार में जब आपकी परफॉर्मेंस जोरदार हो.
Bilkul, and I'm sure they have a lot to prove. It's like this opportunity is great and it's going to be fantastic. Let's look at our next squad, please. This is the Hmm. Rajasthan squad, and I'm going to let you. On paper, it looks Yeah, absolute. it's a beauty. Look at that. Yashasvi Yeah. Jaiswal, Devdutt Padikkal from RCB, the prolific run getter, left-hander, Shimran Hetmaya, power. Karun Nair is in there. And then, of course, you've got Shubham Garewal, all-rounders, Jimmy Neesham, Coulter-Nile, Ravichandran Ashwin, and you got Yuzi Chahal. These are guys who can win you games single-handedly. So to me, this looks like a pretty decent and deadly side. And make no mistake, with Joss Butler and maybe Devdutt Padikkal, once and again, left and right combination working for a lot of sides. This year, I think most of the sides who sat on that auction table have, come with a plan. They want their left and right combination for their opening batters as well. You look at predominantly all teams have got that left and right combination right at the top of the order. And tell me about the Sanju Samson, the new, their captain. Let's discuss him. How confident are you with him? For him and the team. See, Not well, he's that got great a record. not that great a record, but he himself knows that a couple of games every season, he'll come out there, he'll get you 100, he'll get you a 90 odd, he'll win you a game single-handedly, but then all goes quiet. और बड़े मजे की बात है, मैं उनको एयरपोर्ट पे मिला था, दिल्ली एयरपोर्ट, जब हम सब तैयारी हो रही थी, सब अलग अलग अपने टीमों के साथ वो कैंप्स में जा रहे थे, तो मैंने कहा ऑल एक्साइटेड भाई, कप्तान साहब हो, किस तरीके से सीजन जाएगा? कहता भैया इस साल जो है ना, रन बनाने हैं और बाल्टी भर भर के रन बनाने हैं. सो इफ दैट हैपेंस करिश्मा, देन बाल्टी भर भर के रन बनाएंगे तो राजस्थान रॉयल्स, जो ऑन पेपर खतरनाक टीम लग रही है, एक्सिक्यूटिंग देयर प्लान्स और खतरनाक हो जाएगी. Bilkul, of course, indeed. Guys, we would love to hear your feedback. So you know what to do. Sky247.net presents Not Just Cricket. You can just send us your views and you can tweet and you can use the hashtag. And before we continue, we have the wonderful fantasy tracker. This has been picked by you. So let's take a look at this right now. Nikhil, what are your thought process? This Yeah, is what you fantasy think. tracker. That's right. That's my team. आप भी अपनी टीम बनाइए, पॉइंट्स जीतिए. देवदत्त पडिक्कल इतने सीजन से लगातार रन बना रहे हैं, उभरता टैलेंट है. यशस्वी जायसवाल, बटलर राइट द टॉप. ये आपको मुकाबले जिताने वाले खिलाड़ी हैं. संजू सैमसन, निकोलस पूरन, केन विलियमसन, मिस्टर कंसिस्टेंट, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर नया बॉल से पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे. यूजी चहल, द चेस मास्टर, दिमाग से गेंदबाजी करते हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, तेज गेंदबाज, और टी नटराजन, वो अंतिम ओवर्स में यॉर्कर, अपने टोज संभालिएगा. सही कहते हैं, नोज या फिर टोज, टी नटराजन की ये खासियत है. तो ये मेरी फैंटेसी की टीम है. होपफुली ऑल दीज प्लेयर्स डू वेल, सो आई विल मेक अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, करिश्मा, एंड होप यू एज वेल. I just love your energy. Well, there you go, guys. You have the 47.net presents the fantasy tracker that was done by the wonderful Nikhil himself. So let's take a quick look at it once more. There we go. So we have a wonderful person, Rohit from Beijing, has just sent a message, and he said he thinks these two teams are going to do way better this year compared to last year. Yeah, well, I hope so. जो बीत गया, नंबर 7 और नंबर 8 आपने सबको याद दिलाया, वो हो चुका है. अब तो किस्मत अपने हाथ में है, बैट बॉल अपने हाथ में. गलतियां नहीं दोहराएंगे तो फिर आप क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहेंगे. मेरे लिए ये दोनों टीम होपफुली करिश्मा अच्छा करेंगी, बिकॉज व्हेन यू राइट एट द बॉटम ऑफ एनी प्रीवियस लीग्स, you can only go one way, and that's keep climbing, keep climbing. That's it. I like that. The only way is to go up. And secondly, anything can happen. This is the beauty, about this wonderful tournament. So, guys, we have something else. Sky247.net presents our social tracker. Let's take a quick look, shall we?
is our first tweet. Sheldon Jackson with gloves for KKR. Lalit Yadav stepping out up for DC. Tilak Verma impressing for MI. Anuj Rawat shining for RCB. Ayush Badoni on fire for LSG. Abhinav holding nerve for GT. Great Indian domestic talent on fire. So this is great, right? Lots of newcomers, lots of chances, lots of opportunities. And I think people are recognizing this. विदाउट अ डाउट एंड जितने भी यंगस्टर्स के नाम उन्होंने भेजे हैं ना, वो इसमें कोई दो राय नहीं है. 8 से 10 टीमें हुई हैं, यानी कि और यंगस्टर्स को, भारतीय क्रिकेटर्स को मौका मिला है कि वो अपने स्किल सेट को दिखा सके. विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग में आप इस किस्म का प्रदर्शन करते हैं, उससे दो चीजें होती हैं. अब तो इस सीजन अच्छी बात यह है कि दर्शक भी मौजूद है स्टैंड्स में. जब आपको आदत लग जाती है ना करिश्मा, 50,000 70,000 लोगों के बीच में, उस शोर के बीच में परफॉर्म करने की, तो आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आपको अपनी कला में भरोसा होता है. वो जब डर निकल गया, फिर आप जब भारतीय टीम की वो नीली जर्सी पहनते हैं ना, आपका दिल बड़ा हो जाता है, वो शेर दिल जैसे कहते हैं ना. फिर एक ही सोच रहती है कि किस तरीके से मैंने जाके वो मैच जिताना है. सो दिस इज दैट प्लेटफॉर्म. This is what IPL does to you, and I'm so happy वो सब youngsters अच्छा कर रहे हैं. Nika, I feel like you should do some coaching. You're like a life coach, good at coaching, and author over here. Truly. If I start doing that, Karishma, you and I will not be able to discuss. No. We need you with us. Actually, you can do that next time. We need you for Yeah. now. Okay, let's take a look at our next tweet, shall we? Oh, this is actually quite sad, to be honest. There was a number of good spinners, but Shane was different. Sachin Tendulkar pays tribute to Shane Warne. Unfortunately, this is, Rajasthan's first game. Then definitely heartbreaking. जी. Yeah. पहले सीजन में 2008 में राजस्थान रॉयल्स जब जीती थी, तो शेन वॉर्न, सब उनको जानते हैं कि वो जादूगर था जब स्पिन को आते हैं, लेकिन वो एक जादूगर, एक मैजिशियन था जो क्रिकेट के बारे में सोचता था, किस तरीके से कौन से खिलाड़ी से बढ़िया प्रदर्शन निकालना है, गेम किस तरफ जा रहा है, गेम की सिचुएशन को पढ़ना उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता. 1999 में हम लोग करिश्मा एक सीरीज खेल रहे थे, इंडिया श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया इन श्रीलंका. पहली बारी मैं उनको देखा था, उनको खेला था, और शायद 2 या 3 ओवर उनके मैंने खेले थे. अंत में उनका गेंद हवा में, पुराना 34-35 ओवर बॉल, पुराना सफेद गेंद जो स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, व्हाइट कुकबरा बॉल, उनका गेंद हवा में स्विंग करता था राइट हैंडर के लिए, कि ऑफ स्टंप से स्टार्ट होता था, वो लेग स्टंप की तरफ ड्रिफ्ट होता था और फिर बाहर की तरफ टर्न करता था. एक ट्रू जादूगर. मतलब जितना बड़ा वो स्पिनर था, उतना बड़ा उनका वो क्रिकेट का दिमाग भी था. कप्तानी अगर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए और कुछ लंबे समय के लिए करते, तो आने वाले खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता. शायद राजस्थान का वो जीतने का और वो सफलता का रहस्य जो है, सीक्रेट राजस्थान का, वो बहुत बड़ा हाथ शेन वॉर्न का भी था. किस तरीके से वो यंगस्टर्स को सिखाते थे, बिल्ड करते थे. बिल्कुल. एंड आई जस्ट थिंक it's just हम बात कर रहे हैं, but it is actually just a very sad thing, and I'm sure the team will want to play, for him as well today, right? I think in their mind it'll be like a onus or a tribute to him as well. I feel. जी, एक ऐसा खिलाड़ी, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है. और सब यंगस्टर्स, सब जितने भी खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स, वो बहुत सुनहरी यादें हैं. वो अभी तक जब सोचते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 52 साल की उम्र में नहीं, ये नहीं हो सकता. शायद ये खबर जो है ना, गलत है. Absolutely, unfortunately. Well, anyway, that was our Sky247.net presents our social tracker, and let's take a look at it once more. So let's discuss the game. It's the first game today in Pune. So let's talk about that, the conditions, the pitch report, like whatever your thoughts are about Pune and the conditions over there. Well, Karishma, I think it's the first game for both these sides, and पुणे में भी पहला मुकाबला है. बट जो ट्रेंड देखेंगे ना, और ये T20 का ग्लोबल ट्रेंड हो गया, जब तक विकेट में कुछ फर्क ना हो, जो भी कप्तान टॉस जीता है ना,
वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करता है. दे वांट टू चेस. 120 गेंदों के फॉर्मेट में टारगेट ऑन बोर्ड, यू कैन प्लान बेटर, एंड वी स्पोक अबाउट दिस इज वेल. बड़ा रेयर होता है कि 20 ओवर में आपकी पूरी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगी या सारे की सारी टीम ऑल आउट हो जाएगी. सो यू कैन प्रिपेयर Yeah. बेटर. सो ये एक ट्रेंड चला है और अब तक आईपीएल में वो ट्रेंड जो है वो चेसिंग वाली टीम ही जीती है. एंड आई थिंक टॉस हो गया है और केन विलियम्स साहब टॉस जीत भी गए. Soil में भी फर्क है ना, क्योंकि this is made with red soil and the one in Bombay, or am I getting it mixed up? But this is black soil and the one in Bombay is red soil. So how does that make much of a difference? जी, लाल मिट्टी की जो विकेट होती है और उस पे जब घास होती है तो थोड़ा सा और उछाल होता है. यू गेट अ लिटिल मोर बाउंस एंड द बॉल कम्स ऑन टू द बैट अ लिटिल नाइसर. बट पुणे की Yeah. मिट्टी की आपने बात की, ये विकेट बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए. चाहे उछाल उस किस्म का ना हो, घास के साथ दो सामान्य कंसिस्टेंट बाउंस रहता है, बॉल स्किड करके बॉल और अच्छी तरीके से बैट पे आता है. और शाम के Yeah. समय पे दैट ड्यू, the misdew, when the ball gets a little wet, it only helps the batting side. I tell you, us bowlers, we struggle, man. Everything is for the batting unit. By the way, we've just had news that Hyderabad has won the toss, and ta-da! No surprises, they have elected to bowl. Yeah. Which even I'm an expert, even I could have said this. Well, you are an expert now. Make no mistake about it. But that's been the trend. यही ट्रेंड चला है और जैसे मैं बता रहा था, चेस करना हर टीम पसंद करती है. आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैटिंग. और दूसरी चीज जो बहुत बड़ा फर्क है कि आप बतौर कैप्टन जब करिश्मा टॉस जीतते हैं, आप अपने बॉलर्स को एक सूखा बॉल देना चाहते हैं कि वो अपने 20 ओवर वो सूखी गेंद से डाल दें, क्योंकि गीले बॉल से बॉलिंग करना और मुश्किल हो जाता है. तो इसके दो फायदे हैं. जब आप टॉस जीतते हैं, जहां जिस मैदान में ओस रहती है, तभी आप गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम को बैटिंग के लिए विकेट एड करती है और जब आप बॉलिंग करते हैं तो बॉलर्स के लिए एक वो सूखा बॉल होता है. इट्स अ ड्राई बॉल, यू कैन कंट्रोल इट बेटर. Okay, which Hyderabad bowler are you looking forward to seeing the most? Mr. Express himself, the exuberance of youth. I hope he's playing. Umran Malik, fastest probably bowler in the world, not just the IPL. 150 odd clicks an hour on a track like this. I'd want him to surprise a few batsmen as well. So Umran Malik, if he's playing, young talent from Hyderabad, he should be, looking to surprise one and all. And then, of course, the wily old fox with the wrist spinner and the finger spinner. 48 deliveries between them, Chahal and Ravichandran Ashwin. They'll be a lethal duo, I'll tell you that. Well, let's take a look at the numbers tracker right now. This is the analysis of the two bowling attacks. There we go. That's right there for you. Take a look at that. If you compare just the two windows, Rajasthan on your left, Ravichandran Ashwin 145 wickets, Yuzi Chahal 139 wickets, Trent Bolt जो पहले मुंबई के लिए खेलते थे अब राजस्थान के लिए खेल रहे हैं 76 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 30 विकेट. और वहीं पे हैदराबाद अगर थोड़ा करीब से देखेंगे तो एक बॉलर जो अनुभवी गेंदबाज है वो भुवनेश्वर कुमार 142 विकेट, उसके बाद टी नटराजन 20, वॉशिंगटन सुंदर 27 और उमरान मलिक. खैर उनका करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट विशेस. होपफुली ये 2 विकेट से 2 और शून्य बाद में लग जाए, 200 विकेट्स उनके हो. बट यू कैन सी द कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू टॉक अबाउट बोथ द साइड्स व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग एज वेल. सो अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर द राजस्थान साइड without a doubt. Absolutely, absolutely. Let's look at the two Caribbean power hitters. And which one would you want on your side, Gil? Go on, be honest. With Nicholas Puran, because he bats higher up the order, the opportunity he gets, he needs to make use of that opportunity. The bat's been quiet last season and even in international cricket. Nicholas Puran, I think he gets going, he'll win you the game. Shimron Hetmyer only comes into the game when some of the other guys don't get that sort of opportunity or they miss their opportunity at the top as well. But both lethal left-handers. Take a look at that strike rate, more than 150. So these guys really
pack a powerful punch. 31 sixes to Hetmeyer and Nicholas Puran, 44. And if I literally look to break it down, Nicholas Puran's 44 sixes, bulk of those sixes would have been hit against the quicker bowlers as well. Okay, So a lethal, let's lethal bat. Lethal bat. And let's talk about the Joss Butler factor. What are your thoughts on this? Big. Last year round, single-handedly, this man was winning games, 65 games in the T20 league in India, 65 games, close to about 2,000 runs, average 35. The strike rate's the important part. When you're looking to open the innings, 150 strike rate, that just goes to show that in the power play, you're getting your side off to a flying start. Then some of the middle order can come out there and just look to capitalize on that start as well. So that's what you want to be looking at. If you're an opening pair, what are you looking to contribute towards your side, Karishma? Is make sure you're on the other side of 135 in terms of strike rate. You want to get your team off to a flyer when the field restrictions are on in the first 6. Absolutely. And let's just take a look. As you can see over here, we have our lineups for both the teams over here. And are you happy with the lineups? This is Rajasthan right now. And are you happy with the lineup? Well, it looks pretty good. If I can have a look, Joss Butler, Yashasvi Jaiswal, the young, talented left-hander, Devdutt Padikkal. So they got 2 left-handers right up there. Sanju Samson will probably come and bat at number 4. If he does, I would actually want him to bat at 3. Then you've got Shimron Hetmeyer, Riyan Parag, Ravichandran Ashwin, Kultanile, Prasidh Krishna, Bolt, and Yuzi Chahal. They've been able to pick out and their X-factor players all available. So, going deep in the tournament as well, I'll be surprised if there are injuries. You'll see a different sort of playing 11. So Rajasthan pretty much will stick to this playing 11 because they've got a whole bunch of match winners. So I don't see too many changes in there. And Kultanile over Nisham, is that the correct decision according to you? Yeah, well, just to look to bolster, because you've already got so many batters up front. So talking about resources, when you've got that sort of powerhouse in terms of batting, you probably want to go an out-and-out bowler as well. That's why Kultanile was preferred over Jimmy Neesham, or something we don't know. Maybe he's got a little niggle. Right. And well, we have Hyderabad and Natarajan is back in action after a while. So that's going to be pretty interesting to see as well, right? Yeah, very interesting, career for him. He started as a net bowler. जिंदगी उनकी स्टार्ट हुई थी नेट बॉलर. अच्छा प्रदर्शन किया, फिर इंडिया के लिए खेले, बड़ी खतरनाक यॉर्कर डालते हैं. सो आई एम हैप्पी कि एक यंगस्टर वो अपनी कला का प्रदर्शन इस तरीके से कर रहा है कि वो अब एक कंसिस्टेंट स्टार्टर है अपनी टीम के लिए. तो उम्मीद करता हूँ उनका दिन अच्छा जाए. साथ में उमरान मलिक, जिसकी बात हम कर रहे थे, वो तेज गति से गेंद डालते हैं. वॉशिंगटन सुंदर उस टीम में, रोमेरियो शेपर्ड, साथ में अब्दुल समाद को देखिएगा करीब से. अब्दुल समाद बड़ी हिट्स लगा सकते हैं. मैच फिनिशर का रोल उनके कंधों पे दिया है, उनकी जिम्मेदारी. निकोलस पूरन, राहुल त्रिपाठी केकेआर से जो अब हैदराबाद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. केन विलियमसन, मिस्टर कंसिस्टेंट, एडम माकरम और अभिषेक शर्मा. व्हाट्स दिस किड? अभिषेक शर्मा जो पारी की शायद शुरुआत करेंगे, वो एक एंड को संभालते रहेंगे. और जितनी भी ये बैटिंग है, सनराइजर्स हैदराबाद जो बैटिंग लाइनअप नजर आती है, जिम्मेदारी रहेगी कि केन विलियमसन डीप बैटिंग करे. बाकी की बैटिंग जो है वो बाकी इर्द गिर्द उनके चलती रहेगी. द ओल्ड क्लीशेड सेइंग, करिश्मा, the glue that binds that batting order together will be Kane Williamson for Sunrisers Hyderabad. Well, that was our numbers tracker. Okay, we have something very fun for you and you're going to enjoy this. We have a trivia tracker, so let's take a look at it. If you can identify this wonderful hybrid that's been made with a lot of effort and love. Any guesses? Do you need any hints?
Well, let people start tweeting, join our conversation. वो कहते हैं ना, हमारे परिवार के साथ जुड़िए, अपने जवाब भेजिए, और फिर जैसे ही मैच खत्म होगा बताएंगे आपको नहीं, कि don't आप जीते, सही judge. था कि नहीं था। नहीं पता तो बोल दो। हाँ, Don't judge. लो लो, एक तो मेरी बिरादरी के नजर आ रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ जितने व्यूअर हैं करिश्मा, वो भी तो अपना जवाब वही भेजे। you आई said वांट टीवी हमारा के परिवार भी बढ़ाओ। आंसर सॉरी। Okay, the answer is going to be uploaded right now for you, actually, in the next few seconds. It's Ashwin and Washington Sundar. तभी तो बताया ना, मेरी बिरादरी के लग रहे हैं। So I used to bowl off spin as well. But I wanted We'll give all our family to join and send their answers as well. it's okay. And that was our trivia tracker. So let's take a look at our poll results. And these are on our social platforms. Oh, wow. Do you It's agree, like Nikhil? without a doubt, one-sided. इसमें कोई दो राय नहीं. When you have Ravichandran Ashwin and Yuzi Chahal bowling in tandem, वो 48 गेंदें 8 ओवर बीच में, और जितनी विकेट्स उन दोनों के बीच में है, for Hyderabad they'll have to plan better कि हमारे को नई बॉल के खिलाफ रन बनाने हैं, क्योंकि बीच के ओवर में हमारे को स्पिन परेशान करेगी. तो स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर डालने के लिए the power play, the first 6 overs will the field restrictions. If Hyderabad capitalizes that, then it'll make a difference. Otherwise, it'll be very tough for Hyderabad with the kind of quality of Rajasthan bowlers that they have. Okay, Nikhil, before I let you go, what are your predictions? A very quick one. Rajasthan, Hyderabad. Who won the toss? The side that won the toss and the side that's going to be chasing, it's going to be interesting. But it makes a big difference. The side that chases is obviously going to be beneficial. But to me, I think also Rajasthan a better side. So hopefully things change to me. Yeah. Well, anything can happen. Thank you so much for joining us. We're going to be back at the end of the show, guys, and we're going to enjoy this game. Remember, Sky247.net presents Not Just Cricket. We will be back very shortly, and may the best team win.